Thank you. Yes, Good Mr. evening Vipul. to yes, good evening to everyone. So this is the presentation on high density planting system in cotton. How to grow the cotton in high density planting. So this on to high density planting system in cotton, planting more and yield much more. It's my topic. So when talking about how to outline of this presentation or this lecture. So first, I will discuss briefing about the introduction of what is cotton and how cotton evolved and how the taxonomy of the cotton is. And thereafter, we will move towards the production scenario, and thereafter we will talk about the high density planting system. So, what is high density planting, and first how the India came existing with this kind of beautiful system. And then after we will talk about the production methodology of cotton. Then after, what is the merit and what is the demerit? What are the pros and what are the cons of this system, high density planting system in cotton? And then after the achievement, which variety, especially released by the CSIR Nagpur and other universities, and thereafter we will conclude our this lecture. So talking about the introduction, first, what is cotton? So cotton is basically derived from the Arabic word, which is word "kutan." The literally meaning of this "kutan" is a spinnable fiber. So and this cotton is belongs from the genus Gossypum, and the Arabic word that "kutan" or this Pluton, and then after goes means this Gossypium genus. The gose is mean the meaning of the gose is the soft substance. Cotton is also called as white gold, and cotton has fif- uh, 50 species. Among that, 43 is diploid and 7 are tetraploid. And among from this 50 species, only four species are been cultivated, and 46 species are the wild. These are the tetraploid species of the cotton. When we're talking about the taxonomical order of the cotton, cotton is belonging from the kingdom Plantae division Magnoliphyta and family Malvaceae, genus is Gossypium. So there are four species of the cotton. First is Gossypium hirsutum, after Gossypium barbadense, Arboreum and Herbaceum. Gossypium herbaceum and barbadense are both are tetraploid species, and these both are mainly cultivated. Like hirsutum is the main species which been cultivated among the whole world, especially in India. This what Gossypium hirsutum is most preferable species for the cultivation for farmers. Gossipum hirsutum is also called as American or Upland Cambodian Dharwad cotton, and it is best for the fiber yield. Thereafter, Barbadense, it is also the tetraploid species and also called as Egyptian Pima cotton. It has a big and larger fiber length. That's why it is used for the uh, fiber length. And then after Arboreum and Herbaceum, both are the old world or desi cotton. Talking about the production productivity scenario of the cotton from the last year India has been the highest producer among the world and followed by China. So world has been area 316 lakh hectare production. That area is produced around 1,131 lakh bales with the productivity of 778 kg per hectare. So here one question is arise: why production of India is
productivity of India is low, even if the production is higher. Here I mentioned the productivity of India is only 478 kg per hectare, but the production of India is very high. So mainly the area that India is being cultivated right now is far far higher than that of the other countries like China and United States. So ultimately, India followed the old practices for the cotton. Even whereas the China has a small area like 25 lakh hectares that will produce a double of its production. Like China produced double of like they produce 200 lakh bales. Like they have productivity of thousand more than 1,000 kg per hectare because they are followed this kind of the practices like the high density planting. They have the genotypes varieties which are highly suitable for the uh, high density planting system. Now talking about specifically India, Gujarat is the highest producer or larger producer of the cotton, followed by Maharashtra, Telangana, and Rajasthan. What are the s- uses of cotton? So cotton is mainly used for the seed purpose, cotton fiber, cotton oil, cotton seed cake, cotton seed pearls, and cotton stock. Now moving towards our main topic, which is high density planting system. So what is high density planting system? So this system is first been adopted by the China, USA, Australia, and Brazil, and they are enhance this that they are able to enhance the cotton field by the increasing planting density. And this system is also called as narrow row system or ultra narrow row system in the broader foreign countries. So first, this system is arrived at the CR Nagpur. So Cotton Institute Nagpur. So uh, they have early maturing semi-compact genotype for uh, they have this kind of semi-compact or short stature genotype. They are able to increase the yield by this kind of the genotypes. So how what kind of the traits to be the considered for this kind of variety? Like हम कैसे फील्ड हम कौन सी वैरायटी सिलेक्ट करेंगे हम कौन सी वैरायटी में क्या क्या एस्पेक्ट या पैरामीटर्स या ट्रेट्स कैरेक्टर हम कंसिडर करेंगे ताकि हमारी फील्ड ज्यादा हो सके और हमारी वैरायटी एक अच्छी बन सके. The first point is selection of appropriate genotype and plant geometry according to the soil rainfall and irrigation. So we have to select the appropriate genotype like having the short stature, lower number of monopodia with higher number of the symphodia. Then the compact short stature and means compact genotype and short stature. It have the like they don't have height higher than that of 2 feet or uh, like 1.5 feet. Lower or zero monopodia. They don't. They maximum they have like one monopodia or zero monopodia is the best because monopodia having the higher length, so it will increase the plant geometry, plant girth, so that they don't able to fit in this kind of the system. Short sympodia. So short sympodia, it will also the aim of short sympodia is the to become the compact of the genotype. So to becoming achieving like this kind of genotype, we have to be having the short sympodia and early maturing in terms of 50 to 50% of flowering. This is the main thing. Like we have to select those genotypes which having uh, these kind of things like days to 50% flowering at least in 55 to 40 days, 45 to 50 days. Minimum number of balls. That is like uh, the key point of this system. So minimum ball when we plant the higher kind of the density, then plant population, ultimately plant population per unit area is been increased in regarding manner. So ultimately the number of balls in particular unit area
is been increased. So the ultimately yield will be higher. Then after open maximum ball in like ball opening has been achieved at the 90 to 120 days after the showing. Medium to big size of ball is medium and about 4 gram is the 4 to 4.5 gram is the enough. Resistance to biotic, all kind of the stresses on the insect, abiotic like heat tolerance or some salinity tolerance, that kind of abiotic stresses, they are resistance. Now, what is the compact? What is the super compact? What is the pole compact? What is the high robust? So this and this plant types is the first like I show this in the shapes manner. So highly robust. This kind of genotype is called as highly robust. This kind of genotype, like they have they are considered as the compact genotype. The tall genotype they have higher height, but they didn't have the much a gap. Then after the super compact, is like ideal concept. This is not likely fit in this kind of system. So base genotype is the compact. Highly robust is like hybrid, vigorous hybrid. They are generally highly robust. So this kind of genotypes are didn't fit in this kind of system. So why one question arises in our mind that why India doesn't have earlier attempted like they didn't actually PS didn't attempted earlier. Why? So the question, the answer of like might I'm not sure about this, but might the this question having this kind of the answer like cotton breeder, those who are researching this kind of field, they are mainly focuses on this bussy and monopodial variety. They much more focused on the monopodial variety. So higher the monopodia, then they think about that. The higher the monopodia, so we ultimately get more yield. But this kind of the system didn't followed in the foreign or abroad like China and Brazil and Turkey. So they moreover focus on the early maturing of dwarf and compact variety. So ultimately that are they are highly suitable for the high density planting system, and that will not be priority in our India. So mechanized picking or the mechanical picking, like they our country doesn't like हमारे कंट्री में ज्यादातर हम लेबर से ही पिकिंग करवाते हैं. So mechanical picking is not a prior option or a primary option for our harvesting. So uh, and in where compared with the other countries like China and USA, the mechanical picking or mechanization or mechanized picking is the primary option or prime option for them. So then after the agronomist like जब भी breeder एक अच्छी variety देता है बाहर, अब agronomist वो मोर ओवर कंसंट्रेटेड ऑन दी ऑप्टिमाइजिंग जियोमेट्री. लाइक हम कितनी गैप ज्यादा रखेंगे तो रोबस्ट जीनोटाइप होगा, तो जितनी गैप हम ज्यादा रखें वो और खिलता जाएगा और उसकी वेजिटेबल और लग्जूरियंस ज्यादा होगा, वेजिटेबल ग्रोथ ज्यादा होगा. तो ये फॉरेन में या अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड दे डिडंट फॉलो दिस काइंड ऑफ द प्रैक्टिस. Now the comparison between the India and the other countries, what they are doing right now and what we have. So we are moreover the cultivars or varieties which are practiced by the farmer. They are generally use the hybrids. Whereas the China, USA, Mexico, Brazil, they used variety and variety. They having the features, they having the traits like short seam podia that highly suitable for the high density planting system. The spacing, we are generally prefer the spacing plant to plant is 45, 60, 90, 120 centimeter, but they follow only 10 centimeter between the plant to plant population per hectare. Generally, when we calculate our spacing in spacing followed in our India 120 into 60 or 45 centimeter. So outcome of
per hectare, like per hectare outcome of the plant population is 11,000 only, and the seed rate is 2 kg per hectare. Whereas when we follow this kind of system, 10 centimeter plant to plant distance, so the plant population is increasing more than 1 lakh, more than 1 lakh plants in particular hectare or a unit hectare. Plant architecture is robust or bushy, whereas in other countries, beside erect and compact plants are more preferable. Ball per plant, we are prefer like higher kind of ball, higher number of ball, more the yield will be produced. But this concept is not fitted in this system. You have you have like least number of balls, but the higher number of the plant population. Ultimately, when you uh, multiply this to with this 1 lakh plant population, so ultimately the answer will be higher in this side, not from this. So lint yield is like 500 kg per hectare. Here, like 1,000 and 1,500 kg per hectare. Generally, pickings are 3 to 5, and here and these are the pickings in our India is like manual or from the laborers, but here the picking is mechanized. This kind of things, then mainly this point are to be covered or mainly focuses for the India and other countries. Now, when talking about the spacing, how spacing affect. So our traditional spacing, when we compare our traditional spacing plant to plant or row to row distance, so it will having the plant population of 18,000 plant per hectare, and wind yield is generally 1,400 to 1,600 kg per hectare. When we reduce it to this 6 centimeter plant to plant, so it will be like हम इतना भी कम नहीं कर सकते कि ज्यादा कम कर देंगे तो इट विल बी नॉट एबल टू ग्रो इट विल बी नो एबल टू ग्रो मैन्यू लाइक अच्छी तरह से वो ग्रो नहीं हो पाएगा। प्लांट पॉपुलेशन तो यहाँ पे ज्यादा आएगी पर अल्टीमेटली वो इतनी अच्छी yield या उतना अच्छा बॉल नहीं दे सकता है। जब हम एक एक उसके ऑप्टिमम लेवल, जो उसका ऑप्टिमम लेवल है उससे हम कम नहीं कर सकते। ऑप्टिमम लेवल 10 सेंटीमीटर। जब हम दो प्लांट्स को 10 सेंटीमीटर तक ग्रो करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं, तब तक हमारी यील्ड हाईएस्ट आ सकती है लाइक 2200 टू 2800 केजी पर हेक्टेयर। हम पेड ग्रो से भी जा सकते हैं। तो पेड ग्रो सिस्टम लाइक 90 सेंटीमीटर हम दो पेयर हो सकती है। एक दो पेयर के बीच में हम 30 सेंटीमीटर गैप रख के बाद में फिर से एक दो पेयर आएंगी, तो उसके बीच में 90 सेंटीमीटर हम जगह रख के हम आगे दूसरी पेयर लगा सकते हैं। तो in this kind of system we can able to get 83,333 plants per hectare. Ultimately the yield will be 2,000 to 2,500 kg per hectare. So I distributed this kind of like uh, spacing with the country. So these countries mainly, these countries are followed 19 to 30 centimeter or this 19 to 45 centimeter, 19 to 60 centimeter, 19 to 90, 120 into 45 centimeter. Like हम देखेंगे जब जब हम नीचे आएंगे तब तक मैंने ऐसे कंट्रीज रखी है कि वो कंट्रीज अपनी स्पेसिंग हाई डेंसिटी प्लांटिंग को ज्यादा रिगार्ड्स करती है। तो मैं नीचे आऊंगा कि ये कंट्री है। सेकंड सेकंड आप बॉक्स देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 90 इंटू 20 सेंटीमीटर और 80 इंटू 20 सेंटीमीटर दिस कंट्री। एंड लास्टली दोज I frequently say the United States, Mexico, Turkey, Brazil, China। यहाँ पे बार बार ये वर्ड्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग ये 19 टू 10 सेंटीमीटर वाली स्पेसिंग दे आर फॉलोइंग। तो चाइना में आप देख लो अभी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, मोर देन 70 केजी पर हेक्टर की प्रोडक्टिविटी चाइना के पास। हियर इंडिया, इंडिया इज इन दिस पोजीशन लाइक वी हैव ओनली 500
less than 500 kg per hectare. Why we are follow this kind of system? Like spacing हम जितनी भी ज्यादा रखेंगे उतना प्लांट पॉपुलेशन कम होगा। और ऑब्वियसली ये ये जो चीज करनी है हमें 19 to 10 सेंटीमीटर रिड्यूस करना है, वो हम हाइब्रिड से नहीं कर सकते। उसके लिए हमको वेराइटीज चाहिए अच्छी अच्छी। जो अभी एक हमारे सूरज करके एक शानदार चेक है हमारा इंडिया का। और मैं स्पेसिफिकली मैं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, वहाँ से भी एक अच्छी वेराइटी G-Cot 42 which is highly suitable for the high density planting system. CTHV 2316, this is also released from the Talod, which is the sub-center of the cotton. So this kind of the varieties which will highly suitable for the to make our India from this graph to like in this kind of the fitted in adjustment with the Brazil and Turkey. प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है, वैरायटी का हम सिलेक्शन कैसे करें? मैंने बताया आगे की शॉर्ट हाइट होनी चाहिए, लाइक दे हैव स्ट्रॉन्ग पासिंग हैबिट एंड हाई यील्ड पोटेंशियल, है ना। फिर एक सिलेक्शन हम कैसे करेंगे? फिर जनरली हम जहाँ पे कॉटन ग्रो करते हैं, डीप ब्लैक सॉइल और सैंडी लॉन सॉइल विच इज द बेस्ट फॉर द कॉटन। सीड रेट हम क्या रखते हैं? जनरली सीड रेट कॉटन का होता है 2 kg पर हेक्टर, बट इन हम जब प्लांट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम, so the seed rate will be obvious increase, not it will be 2 kg. So the seed rate is 18 to 20 kg per hectare. उसी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड से, थायरम से। इमिडाक्लोप्रिड भी इंसेक्टिसाइड बना, थायरम थायरम से भी हम कर सकते हैं। एग्जोटोबैक्टर और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हम दे सकते हैं इन दी सीड ट्रीटमेंट, है ना। फिर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, सो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो नजदीक की यूनिवर्सिटी है वो आपको क्या रिकमेंडेशन करती है अकॉर्डिंग टू योर सॉइल, एंड आप सॉइल टेस्टिंग करवाते हो तो वहाँ पे आपको कौन सा बेनिफिशियल लग रहा है पूरी तरह से, तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। प्लांटिंग मैंने आगे भी बोला कि हम डिस्टेंस बिटवीन हो हम 90 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर इज लाइक वो बहुत कम हो सकता है, but 90 centimeters is the standard, and the distance between plant, so it will be 10 minimum, so in minimum साइड से हम देखेंगे तो 10 is the minimum। उससे हम कम नहीं कर सकते, लाइक 9 8 इतना नहीं कर सकते, बिकॉज 10 is the optimum। या फिर मैक्सिमाइज हम जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम करना चाहते हैं तो 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर तक हम जा सकते हैं। वीड कंट्रोल हम पेंडेमिथलिन से कर सकते हैं, क्विजाल फॉक है हमारे पास, पेंडेमिथलिन एज हम प्री इमल्सन दे सकते हैं। इरिगेशन जनरली हम 2 से 3 इरिगेशन करवाते हैं क्वार्टर में। देन आफ्टर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम आप 167 to 180 डेज पे दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड यील्ड आपकी जो ये अभी हमारा इंडिया का सिनेरियो है कि 14 या 20 मैक्सिमम 20, हाँ 20 100 kg पर हेक्टर हम जा सकते हैं, बट ये हम सिस्टम यूज करेंगे हम 2000 से 2500 kg पर हेक्टर तक का। दिस इज दी लाइक स्पेसिफिकली एफिड के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? डाइमिक्टिन है, डाइमेथोएट है, एसिटामिप्रिड है। वाइट फ्लाई के लिए भी हम ऐसे और क्लोनाफेनिक ज़्यादा यूज़ करते हैं। पॉटेड बॉलवर्म्स और पिंक बॉलवर्म के लिए हम क्लोरोपाइरिफॉस या क्लोनाफेर ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिस इज जनरली ग्रे मिल्ड्यू और ग्रीड की बात यहाँ पे मैं ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे रिसर्च भी मैंने इस पर्टिकुलर यहाँ पे किया हुआ है इस हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में। तो मुझे ज़्यादा पता है कि ग्रीड और रॉट एंड ग्रे मिल्ड्यू ये चीज़ मैंने ज़्यादा फेस की हुई है। तो इसके लिए हम कल्चरल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, बैलेंस्ड एनपीके। इसलिए मैंने आपको बताया कि आगे आपके सॉइल में कितना एनपीके चाहिए उसके हिसाब से डालना। ऑर्गेनिक मैन्यूअर आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्यूअर इज बेस्ट इन द सेंस ऑफ मेंटेन द सॉइल हेल्थ। इरिगेशन आप शॉर्ट एट शॉर्ट इंटरवल पे दे दो, क्योंकि 2 से 3 इरिगेशन आप चाहिए तो आप थोड़े ज़्यादा कर सकते हो, तो इट विल मेंटेन फॉर द ग्रे मिल्ड्यू। तो आप जो भी
हमको लगे कि ग्रे मिल्ड्यू आया है, तब वो प्लांट को पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्ट इन्फेक्टेड प्लांट को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ट्रीटमेंट आप जनरली यूज के लिए तो ट्री स्प्रे का मैंगोसेप्टस स्प्रे आप कर सकते हो। बायोकंट्रोल एजेंट्स भी है जिनके लिए स्पेशली फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम आती है, तो उसके लिए हम ट्राइकोडर्मा विरिडी का यूज करते हैं। और स्पेशली ग्रे मिल्ड्यू के लिए आप कार्बन यूज कर सकते हैं। मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है इस सिस्टम के? एचबीपीएस के मेरिट्स और डिमेरिट्स की हम बात करें तो मेरिट्स सबसे बड़ा और अच्छा मेरिट तो यही है कि यील्ड और फाइबर क्वालिटी हमारी इंक्रीज होगी, और हमको फर्टिलाइजर्स यूज और लेबर कॉस्ट हम कम कर सकते हैं इससे। रिडक्शन इन वीड पॉपुलेशन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम पॉपुलेशन कवर कर लेंगे कॉटन से, तो वीड पॉपुलेशन कम हो सकती है। हमें क्रॉप मैच्योरिटी सुटेबल रेन फेड और शैलो मीडियम लीफ फेड अवॉइड करने में बहुत सिंक्रोनस फॉल ब्रशिंग which is amenable to the mechanical harvesting. Reduction in insecticide uses with smaller windows. Facilitate double cropping, increase the profitability. Minimum tillage, reduce runoff, reduce soil burn. Now, move towards the demerits. So, require canopy management for months. एक हमको यानी ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा लग्जरी और सेडेटिव ग्रोथ हो, तो हम लोग नेपिकेट क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। वाटर मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा मॉइस्चर कंज्यूम करने के लिए ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायर द डिफोलिएंट्स, मैंने आगे दो डिफोलिएंट्स हमको यूज करना पड़ेगा कि नेपिकेट क्लोराइड बेस्ट ऑप्शन होगी। एक्चुअली इस रिसर्च हमारे इंडिया में बहुत जगह हो रहे हैं, और अभी ये एक अच्छा क्रेज है, एक अच्छी एक नीव है कि CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट कॉटन रिसर्च सेंटर रिसर्च नागपुर 2010 में स्टार्ट किया था उन लोगों ने, और उसके बाद में AICRP प्रोजेक्ट भी आया कॉटन की। So they have started a separate trial on the evolution of compact diversity, highly suitable for the identification of the system. So variety first जो थी हमारी CSH3075 was the first variety for the release for the HDP। मैं यहाँ पे थोड़े बहुत जीनोटाइप डाला हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आप देख सकते हो कॉटन की मैच्योरिटी बॉल बस्टिंग सिंक्रोनस हो रही है, तो इट इज हाईली सुटेबल फॉर द मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग। लास्ट फोटो आप देखोगे तो यहाँ पे सब ग्रेन बॉल्स भी आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे थोड़े थोड़े बस्टिंग बॉल भी दिखाई देंगे। दिस काइंड ऑफ बॉल्स विल बी नॉट सुटेबल फॉर द लाइक मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग। दिस इज द GTHV 1328। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मोनोपोडिया है ही नहीं। एक मोनोपोडिया विदाउट मोनोपोडिया यहाँ पे पूरा कॉटन उसके जो भी बॉल्स है पूरे उसकी मेन स्टेम पे है। मेन स्टेम बियरिंग ये कैनोपी कम कर सकता है और हम ज्यादा पॉपुलेशन क्रिएट हो सकती है। अचीवमेंट्स की बात करें हम तो यहाँ बहुत सारी वेराइटीज है। लिस्ट ऑफ वेराइटीज है। CSH3075 फर्स्ट वेराइटी और सबसे ज्यादा वेराइटी जो भी यूज हो रही है वो है सूरज। दिस इज दिस मेंशन ओवर जीएस CO17 is one of the best variety, and GTH13 it is suitable for the Gujarat condition country, but whole India this variety is used for the whole India. Conclusion conclusion of this lecture is like HDPS is an automated system, production system. So हमको जो हमारा फील्ड क्रिएटिव है जो हमारी ये स्टेगनेंट हुई है उसको ब्रेक डाउन करने में हमको हेल्प कर सकता है। जैसे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, लाइक क्लोथिंग की ये वो। तो हम ये HDPS से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ती पॉपुलेशन में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो फार्मर्स के लिए मेंटेन
अच्छी यील्ड पा सकता है फार्मर ये सिस्टम से, और ब्रीडर को एक अच्छा स्पेसिफिकली उनको एक अच्छा मौका मिल सकता है रिसर्च करने का इस फील्ड में. So actually this concept will significantly contribute to maintenance the implemented leads to the cotton production future technology in the India. Thank you everyone. Thank you very much, Mr. Vipul, for an informative presentation. I will take up the questions from the participants now. In the meantime, can you please stop sharing the screen so that we can see your full video? Yeah. The first question is, what is high density planting in cotton, and how does it differ from traditional cotton planting methods? So madam, high density planting system एक मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेडिशनल सिस्टम हमारे जो है, हम ट्रेडिशनल सिस्टम में ज्यादातर 120 टू हमारी जो रो से रो की डिस्टेंस होती है वो 120 सेंटीमीटर, प्लांट से प्लांट की जो डिस्टेंस होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है. तो हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं जनरली. और जो हमारे रोबस्ट कॉटन है, हमारे जो बड़े बड़े वेजिटेटिव ग्रोथ कॉटन है, तो उसको ब्रीडर अभी शॉर्ट कर रहे हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में ला रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा कॉटन को एक ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन में ग्रो कर सकते हैं अभी. और यानी हम कर सके ऐसा कुछ हम जीनोटाइप लाए, अगर एग्जिस्ट करे इतना छोटे छोटे जीनोटाइप हो तो ज्यादा हमको यील्ड मिल सकती है. तो डिफरेंस मेनली मैं ये कह सकता हूँ कि सिस्टम तो वही है, कल्टीवेशन तो हमको वही कैसे ही करना है जैसा हम लाइक करते आ रहे हैं. पर मेन सिस्टम वही है कि हम ज्यादा कॉम्पैक्ट जीनोटाइप यूज करेंगे, ना कि जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में बड़े बड़े कॉटन जो होते हैं हाईली रोबस्ट, वो यूज हम नहीं करेंगे. और हम डिस्टेंस जो 120 है उसकी जगह हम 90 रखेंगे, और प्लांट टू प्लांट 45 to 60 था उसको हम रिड्यूस करके 10 सेंटीमीटर. Okay, I'll move on to the next question. What are the primary advantages of adopting a high density planting system for cotton cultivation? प्राइमरी लाइक मैम, फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमारे कॉटन ग्रोअर्स जो है, फील्ड स्टेगनेशन आ गया हमारे इंडिया में. लाइक मैंने भी बोला कि हमारी प्रोडक्टिविटी 500 केजी पर हेक्टेयर से भी कम है कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज. क्योंकि हम बोलते हैं हमारे हमारे कंट्रीज में फील्ड स्टेगनेशन आ गया है, बट those countries are adopting this kind of things, so हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए, हमें भी डेवलपमेंट रिसर्च में करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये जो हमारा स्टेगनेशन है यील्ड का, हम बढ़ा सके. दैट इज द प्राइमरी फोकस कि हम यील्ड स्टेगनेशन छोड़ सकें. Okay, how does high density planting material impact the yield of cotton crops compared to conventional planting methods? Sorry ma'am, I'm not able to understand. Once again, I will repeat it. How does high density planting impact the yield of cotton crops compared to conventional planting methods? यील्ड का तो मैम इश्यू ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो यील्ड हमको मिल रही है, यील्ड तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी कंपेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम, कि हम लोग एक अच्छी यील्ड पा पा सकते हैं. जो हम ये कॉटन सिस्टम, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो हम यील्ड पा सकते हैं. हाँ, ऑब्वियसली हमको, हम जब रिसर्च करते हैं तब हमको पता चलता है कि थोड़ा बहुत इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता है इंसेक्ट का. तो जनरली जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें कम होता है इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन की. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम नजदीक कॉटन को प्लेस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम पास से कॉटन को ग्रो करेंगे, तो वो होस्ट मूवमेंट जो लाइक इंसेक्ट मूवमेंट वो ज़्यादा हो सकती है और होगी. तो इससे कॉटन में थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा कि फर्क पड़ता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में. लाइक कन्वेंशनल ब्रीडिंग सिस्टम और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग सिस्टम है. ट्रेडिशनल ग्रोइंग, हम जो ट्रेडिशनल
डेंसिटी कल्टीवेशन जो करते हैं, तो हमारा थोड़ा रिड्यूस होगा yield की क्वालिटी में, नॉट इन द क्वांटिटी, बट क्वालिटी में थोड़ा रिडक्शन हो सकता है, बट उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं। What factors should cotton farmers consider when deciding whether to implement a high density planting system on their farms? सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा कि एक अच्छी वैरायटी सिलेक्ट करो, कि एक अच्छा, यानी आप वैरायटी सिलेक्ट करो कि अ, सच्ची में वो वैरायटी आपके पास आएगी, तो वो छोटी वैरायटी शॉर्ट स्ट्रेचर वाली वैरायटी होगी। और ये भी चीज़ कंसिडर करो कि जब आप ग्रो करते हो कॉटन, तब आप लोग एनालिसिस करवा लिया करो ज़मीन का, और लाइक यू हैव टू एनालाइज ज़मीन, लाइक योर सॉइल, व्हाट काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन और व्हाट काइंड ऑफ द कंपोनेंट्स पैरामीटर्स दे वांट्स। तो ये मैं चीज़ बोलूँगा कि एक सच्ची वैरायटी और अच्छी वैरायटी सिलेक्ट करो। और जो आप हाइब्रिड में जाना चाहते हो, हाइब्रिड वेराइटीज हो इन दी हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में, यू कैन ग्रो द हाइब्रिड, देन ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। लाइक आप जो मोनोपोडिया, ज्यादा मोनोपोडिया हो है आ गई हो, तो यू कैन prune that the monopodia, so ultimately the size is fitted in this system, high density planting system। मैं दो तीन चीजें ऊपर ऊपर से मोटे मोटे तौर पे बोलूंगा कि इसका ख्याल करना चाहिए था। What is the ideal plant spacing and row spacing for high density cotton planting? And how does it vary based on factors such as climate and soil type? मैं बोलूंगा कि लाइक द बेस्ट बेस्ट system, like emergency planting system, best distance between the row and best distance between the plant. Row to row, the plant best suited is 90 centimeter. You can place more than 90 or less than 90, but the optimum is the 90 centimeter. You can put maximum you get yield. And the plant to plant distance is 10 centimeter. Like it is also optimum. You can increase, but you can't lower the lower than that of the 10 centimeter. It will be decline your yield, but you can increase the distance from the 10 to 15 centimeter. Okay. Are there any specific cotton varieties or hybrids that are better suited for high density planting? And if so, what traits should farmers look for? Okay. So मैं specifically मेरे एरिया की वेराइटी है, लाइक गुजरात कॉटन 42। So Gujarat cotton 42, it is like moderate height, like they possessing height of 2 feet, and they have like monopodia. Monopodia, they maximum monopodia is two, and minimum it is no bearing. Minimum there is no any monopodia. So आप जब कॉटन फील्ड में आप वेराइटी सिलेक्ट करने जाओ, और मैं फार्मर को बोलूँ कि आप जैसा कॉटन ले सकते हो, तो कोई मैंने गुजरात 42 किसी ने ग्रो किया हो, तो आप उसके फील्ड पे जाओ, तब आपको पता चलेगा कि they whomever farmers that grow this kind of cotton, they didn't have more than two monopodia, और उसकी हाइट बहुत कम होगी। और वो जो भी ग्रो कर रहा है फार्मर, उसको आप बोलोगे तो भी वो बता देगा कि उसके पास यानी जो सिम्पोडिया होगी वो शॉर्ट होगी, और उसकी हाइट एकदम शॉर्ट नहीं होगी, थोड़ी सी मॉडरेट हाइट 2 या 2.5 फुट हो सकती है। तो मैं स्पेसिफिकली गुजरात 42 का जानता हूँ। और सूरज जो हमारा नेशनल फ्लैग एज ए ब्रीडर यूज करते हैं, और सूरज बहुत अच्छी वेराइटी है। तो वो हाइट में थोड़ी बड़ी है और कॉम्पैक्ट है, लाइक दे possess हाइट अबाउट 3 or 3.5 फुट। तो हाइट में बहुत बड़ी है, तो वो सिलेंड्रिकल शेप में थोड़ी टॉल कॉम्पैक्ट हम बोल सकते हैं वैरायटी। So this is the feature of Surat variety. And after that, lots of the other varieties जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में लिस्ट दिया था,
CO17, and after GTHV 13228, and हमारी जो first variety CSH 367, this also been the factorized in the Indian subcontinent. Okay. How does high density planting affect the management of pests and diseases in cotton fields, and what strategies can be employed to mitigate these risks? Uh, मैं बोलूंगा कि पेस्ट और डिसीज का ये कंट्रोवर्शियल पार्ट है। तो अ, मैंने बहुत सारे लिटरेचर पढ़े हैं इस रिगार्डिंग दी दिस टॉपिक, लाइक व्हाट डज एक्चुअली insect will uh, infested higher in the head and foot planting, or disease will able to move spread faster in this kind of the system. But ultimately result मुझे मिले हैं कि हाँ थोड़ा बहुत मैंने आगे भी like like मैं I can say that कि हाँ थोड़ा बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन हो सकता है इंसेक्ट और पेस्ट का, और स्पेशली डिसीज वो फास्ट थोड़ा ग्रो कर सकता है, और हमको like lots of the like fungicides and insecticides is there in the market. So some kind of the insecticide, like they have active ingredient, strong active ingredient, so we can use for the kind of the insecticide to stop this kind of insect pest. So मैं कंपेयर करूँ हमारी जो पुराने सिस्टम सिस्टम है और हमारे अभी जो सिस्टम चलती है उससे हम क्वालिटी थोड़ा इंफीरियर मिल सकती है हमको ड्यू टू दी पेस्ट एंड डिसीज। पेस्ट ज्यादा स्प्रेड हो सकती है और डिसीज भी ज्यादा स्प्रेड अच्छा वो ज्यादा फास्टली और स्पीडीली स्प्रेड हो सकती है फील्ड में। तो हमको इसका ख्याल करना चाहिए। सो हमको अच्छे इंग्रेडिएंट वाली और अच्छे रिकमेंडेड डोज ऑफ दी इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर सॉरी इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड्स यूज टू। Okay. What are the water and nutrient management consideration for high density cotton planting, and how can farmers ensure optimal resource utilization? So water resources key, when we consider the water resources, in general sense, cotton growers they prefer mostly growing the cotton in this season, like in monsoon season. So now cotton is being like 120 or maximum 150 days. पहले कॉटन 6 6 महीनों तक हुआ करता था। अब कॉटन हम जनरली 3 3 4 महीनों में हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, 120 160 मैक्सिमम 160 डेज। सो ये जब हम जनरली जो कॉटन ग्रो करते हैं वो मानसून सीजन में करते हैं। तो ये हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम हम मानसून में करेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा हो सकता है एज पर माई व्यू। क्योंकि जब हम पॉपुलेशन when we increase the population in particular unit area, so it will obviously require more water. So water requirement is higher or double than that of the traditional system. Or ma'am, so water Ah, requirement is okay. Are there any potential challenges or drawbacks associated with high density planting in cotton, and how can they be addressed? like in this uh, in our Indian subcontinent, especially I like जब फार्मर के पास जाओगे कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर तो फार्मर जल्दी अडॉप्ट नहीं करेगा, क्योंकि they feel that this in this kind of the system. So मैं as a scientist मैं उनके पास जाऊंगा कि आप ये kind of the system आप adopt करना, they can't like able to adopt. So ये technology transfer करना है उनकी field में lab to lab, so it will be main risk to the this kind of the new system, जो भी new system new technology arrival होती है तो उसके लिए हम lab to lab ले जाना, that is the big task for any scientist or any companies private. Then after
स्पेशली मैं ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम की बात करूँ तो एक अभी हमारे इंडिया में इतना रिसर्च हुआ नहीं है कि हम ये सिस्टम के लिए अच्छे अच्छे जीनोटाइप्स कि कोई परफेक्ट जीनोटाइप हो कि नहीं, ये मैं बता सकता हूँ कि ये परफेक्ट है, आप ये ग्रो करो, आपके आप ये फाइनली यानी ये श्योरली है, डैम श्योर हूँ मैं इसमें, ये जीनोटाइप ये वेराइटी आप ग्रो कर लें तो आप सक्सेस होगे आइडेंटिटी प्लान। तो मैं ऐसा कोई जीनोटाइप नहीं बता सकता। और चीज़ है कि वाटर में ह्यूज एफिशिएंसी हो सकती है, इंसेक्ट पेस्ट के जो इन्फेस्टेशन है वो भी ज़्यादा ज़्यादा हो सकते हैं। दिस काइंड ऑफ द चैलेंजेस आर देयर। Okay. Can you share success stories or case studies of cotton farmers who have adopted high-density planting systems and experienced significant yield improvement? लाइक मैं अभी मेरा रिसर्च टॉपिक पे था, तो मैंने अभी तक यहाँ जो जब मैं कॉटन ग्रोअर के पास गया हूँ तब तक हम मैंने कोई ऐसा इंसान यानी ऐसा फार्मर नहीं देखा अभी तक कि मैं आपको एक कोई केस स्टडीज बता सकूँ बस। बट हाँ, हमारे जो फार्म्स है, हमारी यूनिवर्सिटीज के जो फार्म्स है, तो स्पेशली वो लोग हमारे रिसर्च पर्पज के लिए हम यहाँ पे करते हैं। तो स्पेशली हमने जो यहाँ पे एक स्पेशल केस रखा था जो फोटोज में पेड ग्रो सिस्टम। तो जनरली मैंने आपको बताया कि सब कंट्री लाइक दे फॉलो 19 to 10 सेंटीमीटर ऑफ द प्लांट स्पेसिंग। पर हमने एक नया ट्राई किया है कि पेड़ ग्रो सिस्टम, कि वो पेड़ हम 30 सेंटीमीटर की रखें, फिर से हम थोड़ी ज्यादा गैप यानी इतनी गैप 90 सेंटीमीटर को छोड़ के फिर से 30 सेंटीमीटर की दो रोज हम बनाए। तो ये एक मेरी उसमें मैं बता सकता हूँ कि रिसर्च के लिए एग्रोनॉमी रिसर्च के लिए हमने ये ट्राई किया था। तो वो एक सक्सेस अलग से है, एक नया ट्राई है कि हम कुछ अलग कर सकते हैं और इसमें हम सक्सेस पा सकते हैं। तो स्पेशली दिस इज द स्टोरी। Okay. What research or innovations are currently being explored in the field of high-density cotton planting, and how might they impact future cotton farming practices? अभी CSIR नागपुर और मैं इंस्पायर्ड हूँ, ये सब चीज़ें सीखा हूँ मैं हमारे US हार्वर्ड के डॉक्टर BM खादी करते हैं रिसर्च साइंटिस्ट। अभी ये CRP एक अच्छा चल रहा है कि आप कॉटन का जो रिसर्च सेंटर CSIR नागपुर उसमें भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो मेन फोकस उनका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऐसी लाई जाए ताकि वो सूटेबल हो सके हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम। तो मैंने जब रिसर्च किया तो इसमें मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी CSIR नागपुर से। तो उन लोगों ने बोला कि अभी ऐसे ट्रायल्स और स्पेशली प्रोजेक्ट ए CSIR सॉरी AICRP पिछले भी कॉटन के लिए अलग से फंड मिलती है उन लोगों को। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च इस फील्ड में कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेन फोकस उनका यही है कि शॉर्ट स्टेज कम जीरो मोनोपोलिया शॉर्ट सिम्पोलिया वाली वेराइटी तो ज़्यादा प्रेफर अभी उन पे रिसर्च चल रहा है CSIR नागपुर US था। Okay. How does high density planting affect labor requirements and the overall cost of cotton production? लेबर रिक्वायरमेंट मैंने एक यहाँ पे सबसे मेन चीज एक पॉइंट रखा है। हम अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम करें तो उसके साथ हमको ये भी सोच रखनी चाहिए कि हम मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग से जाएं। ज्यादातर लेबर कोस्ट हमारी जो आती है वो ट्रेडिशनल में, तो हमारे लेबर को सबसे ज्यादा पिकिंग हार्वेस्टिंग से है। तो जो हम उसको मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग से रिप्लेस कर देते हैं हमारे लेबर कॉस्ट 80% कम हो जाए। मैंने यहाँ पे एक बात की सिंक्रोनस पावरिंग और सिंक्रोनस बॉल ब्रस्टिंग। सिंक्रोनस बॉल बॉल ब्रस्टिंग होगी तो एक साथ सब जो बॉल से वो फूट जाएंगे तो हम उसको
मैकेनाइज हार्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। तो वहाँ पे लेबर कॉस्ट हम कम कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जो अगर हम मैन्युअल पिकिंग करवाते हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन में, तो लेबर कॉस्ट लाइक 1.5 टाइम्स ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम। बट मैं मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग की बात करूँ, मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग आप लाओ, मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग से आप हार्वेस्टिंग करते हो, clean करते हो, तो ट्रेडिशनल सिस्टम से भी हम कहीं गुना कम कॉस्ट कर सकते हैं। तो ये लेबर के रिगार्डिंग चीज। Okay. Uh, are there any government incentives or programs that support the adoption of high-density planting system in cotton farming? नो मैडम, नॉट येट। इससे कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स तो नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट जो खेडूत, जो हमारे फार्मर्स लोग हैं, उनको पीएम किसान जैसे जो चीज, जो पीएम किसान की स्कीम्स वगैरह देती है, लाइक गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है कि बस ये पैसे देती है या वो जो इंसेंटिव देती है, अल्टीमेटली वही है कि मेरे आजू बाजू लाइक मैं जहाँ पे रेसिडेंट करता हूँ, वहाँ के आजू बाजू जो लोग हैं, हम जब साइंस जब हम डिलीवर करते हैं, जब हम इन लोगों को कुछ ना कुछ बताने चाहते हैं, तो जनरली हमारा एक मोटो होता है कि हम नई टेक्नोलॉजी उनके पास पहुँचे। तो मैं कभी चाहता हूँ तो मैं लोगों से ही बोलता हूँ कि आप हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करें। लाइक मैं भी गवर्नमेंट से जुड़ा इंसान हूँ, तो मैं जाऊँगा वहाँ, तो मैं वही बोलूँगा कि आप लोग इन सेमिनार तो तुम ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम का कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करो। एज अ गवर्नमेंट एजेंट, लाइक मैं जाऊँगा तो मैं यही बोलूँगा। ऐसा कोई स्पेसिफिकली गवर्नमेंट स्कीम्स और इंसेंटिव्स नहीं है ना, बट हाँ तुम आप लोग बोल सकते हो कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स ला रही है, उसका पर्पज ये है कि नई नई टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट एजेंट से फार्मर तक पहुंचाए। तो हमारी जवाबदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है वो फार्मर के फील्ड में पहुंचाए थ्रू दी एक्सटेंशन सिस्टम। Okay. What advice would you give to cotton farmers who are considering transition to high-density planting to maximize their yields? मैं यही बोलूंगा कि मैक्सिमम आप लोग एक्सप्लोर करो, मैक्सिमम आप लोग फील्ड में जाओ, मैक्सिमम आप लोग को यूनिवर्सिटीज की विजिट में जाओ। आपके पास कोई ऐसी लाइक यू हैव एनी सेंटर्स फॉर स्पेसिफिकली कॉटन, so you can visit that university sub-center or research station to regards more on the high density planning system, how they work on these kind of the systems. So any professor, any associate professor or any research scientist will let you know that yes, you can go for this kind of the system. They have the templates about that, like our research center in Surat. They have lots of templates or regarding the information of the high density planting system. How can we utilize the high density planting system? How can farmer initiate or initializing this kind of the system? So must I say the must farmer want to grow the high density planting system first, and then after he must visit any nearby research center help to know more about this kind of a new system. So they learn more and they grow more and ultimately they grow more. Okay. Thank you very much, Mr. Rishan. Vipul, we have now completed the round of questions. On behalf of agricultureinformation.com, we like to thank Mr. Vipul Suthar for the talk and for answering the questions. I like to also thank all the participants in the meeting. This meeting will now be closed. Okay.